Okay, so screen is visible to all of you. Yes, sir. अच्छा ताले न्यूक्लियर फिजिक्स तो साथ देथिले लास्ट क्लास रे प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दीची. So electromagnetic waves, there is a chapter called electromagnetic waves. So we'll study that chapter. So before coming to the electromagnetic waves, I'll briefly talk about the Maxwell's equation. हमें जोटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये सब हम लोग पढ़े थे, डिस्कस किए थे. And there are four equations that govern all kind of electromagnetic waves. And I have already said that is radio, micro, infra, visible, UV, X, gamma. There are different kind of electromagnetic waves. Those waves, मैंने हमें कौन पढ़ी चाहिए? They have a electric field component and magnetic field component. As we are studying this magnetism chapter, electromagnetic induction chapter. Whenever a wave is passed through electric field and magnetic field, तो सेटा कौन जोड़े एक्सपेरिमेंट जोटा हमें पढ़ुले तो एई सब जो जिंस हमें पढ़िले. So these four equations they govern the whole electromagnetic spectrum, or in other words you can say that Maxwell's, on the basis of these four basic equations of electromagnetism, he theoretically predicted the existence of electromagnetic waves. An electromagnetic wave is what? It is nothing but the one constituted by oscillating electric and magnetic fields which oscillate in two mutually perpendicular planes. So तुम मानू बोले पढ़ी थी वैसे जो LCR सर्किट ये सब जो मैडम पढ़ाए होंगे, तो उसमें क्या है कि एक इंडक्टर या फिर एक माने क्या बोलेंगे, एक इलेक्ट्रिक सोर्स या मैग्नेटिक फील्ड सोर्स, उसको लेके हम लोग अगर उसको ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, हम जानते हैं कि ऑल द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना they are all oscillating phenomena. Okay, they have a sine component, cos component. Okay, so ये सब जो चीज है, तो इसलिए वैसे ही टाइप का एक मतलब सोर्स में अगर हम लोग रखेंगे एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लेंगे, तो दैट प्रोड्यूसेस electromagnetic waves. Okay, so the wave itself propagates in a direction perpendicular to both the directions of oscillations of electric and magnetic field. So suppose इस statement का मतलब क्या है? So there are we know there are three dimensional axis. Okay, so suppose the electric component is propagating in this direction and the magnetic component is propagating in this direction. The overall wave which is propagating, it should propagate in the z direction. That means the magnetic field is perpendicular to the direction of propagation of electromagnetic wave, and also the electric field is propagating in the direction of electromagnetic field, that is perpendicular direction. Okay, so what is the basic idea is like this. So let us consider this xyz axis. Okay, so let us consider in x axis, x axis में एक wave क्या हो रहा है, flow कर रहा है. Suppose एक visible light है या माइक्रोवेव है या फिर रेडियो वेव है, जो भी है, so it is propagating in x direction. Okay, x direction में propagate कर रहा है, so इसका velocity है c. Okay, so c is the, let us consider this, c is the velocity of the electromagnetic wave with the velocity with which the wave is propagating. But इसको अगर देखा जाएगा minutely, so actually it is electromagnetic wave is what? It is produced by the oscillating electric and magnetic field components. So देखो electric field components are propagating in y direction, and this magnetic field components are propagating in
z direction, and these three dimensions are mutually perpendicular to each other. And what is the wavelength of the particular wave? So wavelength is the distance between two consecutive crest or trough. So देखो ये जो ब्लू कलर का लाइन है, सो यहाँ से गया, ये एक वेव प्रोपागेट हुआ, यहाँ तक पहुंचा, फिर यहाँ तक जब पहुंचा, सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, इसको बोलते हैं क्रेस्ट. जो अपर मैक्सिमा, लोअर मैक्सिमा को बोला जाता है ट्रॉफ. ओके, TROUGH. सपोज दिस वन इज ट्रॉफ, OUGH. Okay, so these are the basic idea which we get from the electromagnetic wave. ये सब जो है वहां से मिलता है. So अभी देखो, so what are the properties of electromagnetic waves? Let us discuss. So as I have said, the directions of oscillations of electric field component and magnetic field. Okay, magnetic fields and electric fields are perpendicular to each other as well as to the direction of propagation. माने जिस डायरेक्शन में एक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्लो कर रहा है, उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगा. Where electric field and magnetic field, they are perpendicular to mutually perpendicular to each other as well. Okay, so the electric field and magnetic field oscillates in same phase. They are in phase with each other. जो sin kx minus omega t and cos kx minus omega t, तो दोनों का phase same रहेगा. There is no phase lag in between the two components. Okay, so the electromagnetic waves always travel through the vacuum with the speed of light. With the speed of light, मतलब विजिबल लाइट का जो स्पीड है, माइक्रोवेव का वही स्पीड है, रेडियो वेव का वही स्पीड है, गामा रे का वही स्पीड है, ठीक है, एक्सरे का वही स्पीड है, तो सबका स्पीड सेम है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में जब ट्रैवल करता है, एक एक्सरे जब वैक्यूम में ट्रैवल करता है, एक विजिबल लाइट जब वैक्यूम में ट्रैवल करता है, या फिर जो जितना भी हमारा जो रेडियो माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रेडियो, माइक्रो, infrared rays, visible, UV, X-ray, gamma rays. So ये सब जो जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, they travel with same speed of light. And what is the formula? C is equal to 1 by root over of mu 0 epsilon 0. What is mu 0? Mu 0 is the magnetic permeability. Epsilon 0 is electric permittivity. Okay, so electric permittivity और magnetic permittivity ये जरा काम नहीं कर रहा है क्या? So anyway, रेडियो माइक्रो तो एटा होची तमरो स्पीड ऑफ द प्रॉपर्टी हेला. So 1 by root over of mu 0 epsilon 0, and that is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. So energy density of the electric field is given by, आमे जेतले पढुतले इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फेनोमेना जेतले पढुतले, so the energy density of the electric field we have calculated half epsilon 0 E square. The energy density of magnetic field we have already calculated, that is half B square by mu 0, where mu 0 is the magnetic permeability. Okay, so what is the total energy density of a electromagnetic wave, of a EM wave? What is the total energy density? That is half epsilon 0 E square plus B square by mu 0. इटाको होल ब्रैकेट रख दो, half is common. Okay, yes, so this is the total energy density of an electromagnetic wave. So E by B, what is E by B?
that is the electric field or the magnetic field of a electromagnetic field, instantaneous electric component and magnetic component, or instantaneous value of electric field and magnetic field at a particular time किंबा गोटे particular instant रे जदि हम गोटे एमती wave गोटे flow करछि at a particular instant we are observing what is the value of electric field and magnetic field ताको जदि हमें ratio करिवा, so that should be always equal to speed of light, that is c, that is equal to 1 by एटी हम जेंटा लिखले root over of mu 0 epsilon 0. So this is the relation, एटा को हमें मन रखिया को पड़ियो. So E by B is equal to C is equal to 1 by root over of mu 0 epsilon 0. So the cross product E cross B, the cross product E cross B always gives the direction in which the wave travels. Okay. So जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टा जो ट्रैवल करूची, सपोज हमें एठी जो फिगर रे देखिले किछ समय पूर्व ये जो फिगर रे देखिले हमें, सो इट देखो x डायरेक्शन रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग, y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है. तो उसका माने डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अगर देखेंगे, so the cross product of two vectors electric field and magnetic field will give us the direction of the wave that is traveling. Okay, so जो E cross B ताको हमें कहबा, so this will give us the direction in which the wave is traveling. But E cross B यहाँ पे क्या हो जाएगा, E cross B are mutually perpendicular, so EB sin 90 है जो, so that means the माने एटा कोन हमें कहि परिबा जे द एटा को कोहंती एक्चुअली पॉइंटिंग वेक्टर, मु आगु को कहिबी सेटा केमती पॉइंटिंग वेक्टर हला कोनला. So moreover the fields vary with the same frequency and in phase with each other. Okay, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ମନେ ରଖ, frequency into wavelength lambda is equal to what? Speed of light. Frequency into wavelength is equal to speed of light. अच्छा, frequency is equal to what? 1 by 2 pi root over of कौन एटा? LC. LC. जदि आमे जेतेले गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आमे क्रिएट करिया पई चाहूचे, so we have to oscillate an electric magnetic field. Okay, गोटे oscillating electric source और magnetic source जेतेले आमे नबा तेबे जाई we can produce a electromagnetic wave. So सेटा को जदि आमे, so what is the frequency of that electromagnetic wave when it is oscillating with an inductance L and capacitance C सब जो नबा, इलेक्ट्रिक फेनोमेना आसी गेला माने सी आसी जीवो, कैपेसिटेंस आसी जीवो, इंडक्टेंस ता कोन हमर जो मैग्नेटिक फेनोमेना आसी गेला माने इंडक्टेंस आसी गेला कांसेप्ट. सो 1 by 2 pi root over of LC. So एटा मध्ये these relations actually these are important while solving problems. This will be very much helpful while solving some problems. Okay, so now, so since we know these are the oscillating waves, so these have a sinusoidal equations. So E is equal to Em by E0. उस जगह E is equal to E0 sin kx minus omega t एमती लिखंती. So where E0 is the what? Amplitude of the electric field component. Okay, or the maximum value of the electric field component. Similarly, B is equal to Bm, that is amplitude. Bm is the amplitude sin kx minus omega t. So B simply B is equal to B0 sin kx minus omega t madhya likha jaye, where omega and k are the angular frequency and angular wave number of a wave. Okay, so k is equal to 2 pi by lambda. Wave number, angular wave number. Okay, so k is equal to 2 pi by lambda and omega is the angular frequency. Why? Since it is sinusoidal wave, so it has a angular frequency. So 2 pi nu, that is nu is the linear frequency and it is omega is the angular frequency, and k is equal to wave number by wave vector that is equal to 2 pi by lambda. So lambda is the wavelength of a particular wave.
सो एटा होची हमर दीटा इक्वेशंस हमें पाइले तापरे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जेंति कहली एंड एक्सेलरेटेड चार्ज emits electromagnetic waves गोटे whenever a charge is moving it is accelerating so definitely it emits electromagnetic waves it emits energy so an oscillating charge गोटे charge जेतेबेले it is oscillating whether it is vibrating in some mean position it एमती गोटे स्ट्रिंग आई मीन है तो स्ट्रिंग टाइप कंप्रेशन एक्सपेंशन अगर इसे हो रहा है सो इवन दैट आल्सो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड अगर जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि एक चार्ज मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में वो तो केस डिफरेंट हो गया कि दैट इज ए नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट जो बोर्स मॉडल बोलता है तो ये सब जो चीज है सो एन ऑसिलेटिंग चार्ज इट प्रोड्यूसेस as in an LC circuit. LC circuit तो हम पढ़ी थी मैडम has a non-zero acceleration. It continues to emit electromagnetic waves. The frequency of electromagnetic waves is always same as that of the oscillating charge. Okay, oscillating charge or frequency जहाँ थिबो frequency of electromagnetic waves जोटा produce होची तार मध्य frequency समान रहिबो. Okay, so and तापरे एटा हर्ज experiment which of these experiment conducted proved the presence of electromagnetic waves or proved the existence of electromagnetic waves in nature चारटा ऑप्शन देथिबो फ्रैंक हर्ज एक्सपेरिमेंट डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन कोन गोटे एक्सपेरिमेंट दे दिथिबो कि कोन हला सो इस केस रे सब लिखिबो which of these experiments which proved the existence of electromagnetic waves in nature that is Frank and Hertz experiment. Frank Hertz experiment or commonly known as Hertz experiment. Hello? So existence of electromagnetic waves by using a oscillator LC oscillator circuit he not only produced and detected electromagnetic waves but also demonstrated their properties of reflection, refraction, interference and established beyond doubt that light radiation has a wave nature. Light जेतेबेले हमें ऑप्टिक्स पढ़िबा सेतेबेले फ्रैंक हर्ज एक्सपेरिमेंट मध्ये पढ़ी दिबी ओके सो सेठी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स not only light but he detected that different other waves also they obey this reflection refraction interference ये सब जो phenomena अछि नेचर रे जोटा कि गोटे विजिबल लाइट को मध्ये हमें एक्सपेरिमेंट करी देखो तो अन्य वेव माने भी सही प्रकार रो सब जो phenomena they also obey those phenomena and that is why he concluded that light is electromagnetic in nature माने लाइट रो मध्ये सेम प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानकर मध्ये सेम प्रॉपर्टी अछि ओके ता माने लाइट आल्सो कंटेन्स ए इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड as well as magnetic field component okay so that was given by Frank Hertz experiment so now let us see this energy transport and the pointing vector ये जो एनर्जी फ्लो हो रहा है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर फ्लो कर रहा है दैट मींस सम एनर्जी इज फ्लोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन समथिंग इज फ्लोइंग कि वो लिक्विड हो गैस हो व्हाटएवर हो सो दैट मींस some energy is flowing because it has a electric component and magnetic component so those are associated with some energy right so some energy is flowing in a particular direction so what is the energy transport and what is called pointing vector let us see so the rate of energy transport per unit area so the rate of energy transport per unit area is described by a vector called pointing vector after the physicist John Henry Poynting he gave his theory and he lived within 1952 and 1914 to discuss these properties what is pointing vector S see तांकर उठे pointing vector रो symbolize कले S is called pointing vector it is a vector quantity काहे कि since it has it is involved माने a directional property is involved electric field a vector quantity magnetic field vector quantity जेते vector quantity दीटा को हमें
cross product karuche, so definitely we are going to get another vector. Okay, so that is called pointing vector. That is E cross B divided by mu zero. That mu zero is derivation ru baharchi. Let us not derive those equations, just try to remember. So E cross B divided by mu zero, where mu zero is the magnetic permeability. What is the value of mu zero? Yes, anyone? 4 pi into 10 to the power 4 minus × 7 -1. What is Tesla में Tm by A by Wb by Ma. WB by Ma. MA. meter into ampere? Yes, sir. Okay, so 4 pi into 10 to the power minus 7 Weber per meter ampere. So तापरे s is equal to माने आमे जदि ए पॉइंटिंग वेक्टर टाको एमती डिफाइन करले, that is E cross B divided by mu zero. And what is the physical significance of pointing vector? Pointing vector is the vector which gives the direction of the electromagnetic wave which is propagating, or the energy propagation by a electromagnetic wave. Due to a electromagnetic wave, I am calling the rate of energy transport per unit area of a wave in a particular direction. Seita ko ame koche pointing vector. Okay, so S is equal to energy divided by time divided by area. आमे कॉल करिवा energy per कोची कोन energy transport per unit area, but there is a time factor also involved. Can आमे we are माने calculating at a particular instant of time, so definitely it is instantaneous माने flow of energy को जदि हम calculate करिवा. So what is the formula? Energy per time per area, माने energy divided by time into area. So energy by time ta kon amar? So we know it, power is energy per unit time. Okay, joule per second, सेटा को हमें कौन नौचे watt नौचे. So energy per time is power. From electric issue study, I mean, answer power is energy per unit time divided by area. So what is the power of this power per unit area, instantaneous power per unit area, that is giving you that is the physical significance of pointing vector. So pointing vector defines power per unit area. So chapter and the option देखियो जानी शुनी confuse करिया पे a power divided by area or energy divided by area, किंतु time देई नथिवो, and energy divided by time divided by area and some other formula. Okay, so ए सब एवडा होचे basic जिंस हला. तापरे आमे लिखिबा कोन? So this can be written like this: S is equal to 1 by mu 0 E into B. Why E into B I have written? Because E cross B is what? EB sin 90 degree. That is equal to 1. Sin 90 mane 1. So EB khali ame rohila. That is the magnitude ame jodi magnitude eti consider kariba. So let us now discuss about only about the magnitude. So EB divided by mu 0, you can write like this. So S is equal to 1 by C mu 0 also you can write into E square. Why? Why? एठी E square केमते हे गेला? ए रिलेशन रो एठी E square केमते हे गेला? Why? सर हम E by B is equal to C. E by B is equal to C. We know it. Just टिके पूर्वरु ଆମେ कहली. ଆଉ ଗୋଟେ E ହେଲା ତ ଆଉ ଗୋଟେ कोन ଆଉ ଗୋଟେ E by B करदने C माने E by B हे जिवो C E square हे. ହେଲା ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବା କିମ୍ବା ଟିକେ ମଡିଫିକେସନ କରିବା ଏଇ ରିଲେସନ ପକେଇକି, ତ we'll get this relation, that is S is equal to 1 by C mu 0 E square, that is instantaneous energy flow rate. So these are the basic माने कोन एई सब इक्वेशंस को हमको मन रखिया पड़िबो टिके. So at least one equation you remember, so the other equations can be found out. कोठी को प्रॉब्लम रे को जगह रे को फार्मूला पकेबा सेटा हमको मन रखी की करियो पड़िबो हला. सो तापरे हमें व्हाट इज, एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंटेंसिटी. सो एई जो जिंसटा हमें नौचे, सो जो पॉइंटिंग वेक्टर टा हमें नेले से सेटा को हमें कौन कहले? व्हाट इज पावर पर यूनिट एरिया बाय एनर्जी
flowing per unit area per unit time. So energy flowing per unit area per unit time at a instantaneous time आमे नेले किंतु over the whole range of time आमे यदि लिखिबा t equal to 1 second और t equal to 4 second के बीच में कितना energy flow किया है. So that is what, that is the average of what is the average energy that have flown, or the what is the average energy that have flown through this particular interval of time. So in that case we define that quantity is called intensity. What is the intensity? That is S average, pointing vector average is equal to energy by time by area average, or power by area average. Energy transport rate as a function of time. Whenever a time factor is coming, so in that case we can call it intensity by energy transport rate as a function of time, right? So I is equal to S average. That can be written like this from the previous equation, 1 by C mu 0 E square average. E square average it हम पकेगा. These two are constants, right? So E square average. But E, what is the formula for E? We know it. EM by EM sin kx minus omega t. এটা আমি জানিছি. So EM square sin square kx minus omega t ର average ଆମେ ଏଠି ନେଲେ ହେଲା. So ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ electromagnetic wave flow କରୁଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ oscillating electromagnetic wave, whenever it is flowing, right? So the average value of sin square theta for any angular value variable theta is half. Okay, so এটা তোমার mathematics রে जो sin cosine এই सब জিনিস তুমি পড়িছো, যদি সে পড়েইଥିବେ जो LC circuit পড়েইলা বেলে. So over a full cycle the average value of sin, full cycle माने कोन, एठू गला एमती एमती जाईकी पुनी एठी पहुंचला. So this is full cycle. गोटे full cycle कोन हला, oscillate हला electromagnetic wave. एटा को हम कहबा full cycle. So the average value of sin square theta for any angular value variable theta is half. So सेटा को हम कहू RMS electric field, RMS velocity जेमती हम पढिथिबो सेमती RMS electric field, root mean square, the root mean square value of electric field. So that is equal to EM by root 2. What is EM? The maximum amplitude जो time में नोटले, this EM. Okay, so there is a maximum amplitude of the electric field component. So EM divided by root 2 सेटा को जदि हमें नेले, so ए इक्वेशन टा हमर हे जिवो. So intensity, ये जो intensity देखो, intensity is equal to 1 by C mu 0, 1 by C mu 0 E RMS ର square. এই total टा को हमें नौचे कोन, that is E RMS ର square ବୋଲି हमें ताको consider करिवे. Okay, so to find an expression for pressure, हमें जो रेडिएशन टा जाउची, सब जो रेडिएशन किबा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टा फ्लो करूची, so let us consider a electromagnetic wave टा फ्लो करूची ए पर्टिकुलर डायरेक्शन रे, ए गोटे वॉल रे किबा गोटे ऑब्जेक्ट रे आसी की इट इज हिटिंग ए ऑब्जेक्ट, और गोटे कंटेनर भीतर गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास करूची गोटे स्मॉल होल दे की ओपनिंग दे की, एंड एठी बाजुची तापरे एठी बाजुची तापरे एठी बाजुची, व्हाटएवर जो रिफ्लेक्शन किबा रिफ्रैक्शन जहा भी होची. So this kind of phenomena is occurring. कौन एटा होची
Right? So anyway, so further let us assume that the object is अच्छा हाँ so it is जो कहली so the electromagnetic wave is propagating and it is hitting to the wall of the any other object. Okay, so I may let us sign an electromagnetic radiation, for example light, on an object in a time interval delta t. So further let us assume that the object is free to move and the radiation is entirely absorbed by the object. So let us consider ये जो radiation जा रहा है ना, so it is completely absorbed by the object, पूरा absorb हो जाएगा, elastic collision जिसको बोलते हैं, ठीक है. So this means that during the interval delta t time, the object gains an energy delta u. ये जो ऑब्जेक्ट था इसको इस पे अगर पूरा रेडिएशन आके एब्जॉर्ब हो गया, so in the time interval delta t, the object gains an energy delta u from the radiation. Okay, so Maxwell showed that the object also gains some linear momentum. Okay, so object also gains some linear momentum. The magnitude delta p of the momentum change of the object is related to the energy change delta u. Magnitude delta p मतलब momentum change कितना हो रहा है, that is related to the energy change delta u. As we all know, what is the formula for momentum? That is equal to कौन? Energy divided by velocity is the कौन? Definition of momentum. Kimba, we can write different formulas for momentum. So in that case, in this case, we can write delta p is equal to delta u divided by c, where c is the speed of the electromagnetic wave by speed of the radiation. ओके, ये हो गया टोटल एब्जॉर्प्शन के लिए. अगर एक ऑब्जेक्ट में हिट हुआ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड पूरा क्या हो गया, रिबाउंस हो गया, रिफ्लेक्ट टोटल रिफ्लेक्शन बैक अलोंग द पाथ. ओके, सो माने गोटे इलास्टिक रिफ्लेक्शन किंबा कहि परिबा ताको किंबा एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन जिसको बोला जाता है. सो उस केस में सो डेल्टा पी, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, that is equal to 2 delta u divided by c. Okay, so 2 delta u divided by c. So from Newton's second law हमें कौन जानते, linear momentum is related to the force by what? Force is equal to rate of change of momentum delta p by delta t. ओके, एंड फ्रॉम द इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो था अभी दिखा रहे थे, सो इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय एरिया बाय एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय एरिया. सो डेल्टा यू कैन बी रिटन लाइक दिस. डेल्टा यू का जो फॉर्मूला है, सो दैट कैन बी रिटन लाइक दिस. सो इंटेंसिटी इनटू एरिया इनटू डेल्टा टी. बुझिएला, intensity into area into delta t हमें लिखि परिबा. So if the energy is completely absorbed, so what is the change in momentum? We can write IA delta t by c, माने energy divided by velocity, IA delta t divided by c. IA delta t divided by c. So what is the force in that case? Delta p by delta t is what? Force. इठी हमें लिख ले. So delta p टा कहते हैं IA delta t by c divided by delta t. Delta t cancel. So IA divided by c. माने I is the intensity, A is the कौन? Area of cross section. किंबा जो हमें जोटा कहूचे एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया जोटा कहूचे. ओके, सो IA डिवाइडेड बाय c माने स्पीड ऑफ द लाइट फॉर टोटल एब्जॉर्प्शन केस में. फॉर टोटल रिफ्लेक्शन बैक टू द पाथ
वैसे ही जैसे यहाँ पे लिखे थे, so 2 delta U by C, that is the change in momentum. So similarly, force is 2 IA divided by C, that is the total reflection back along the path. Okay, तो ये दीटा equations मन रखिया। ये दीटा equations मन रखिया। सो एटा को कहती है रेडिएशन प्रेशर, प्रेशर खाली नो रेडिएशन प्रेशर। ये सब जिनस एडवांस जिनस टिके देखि था आईआईटी जेई ये सब एग्जाम गुडा करे आसी जिबार संभावना अछि। खाली ओयूटी देबे बोली माने कोन अछि, सब दबा ना परीक्षा। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट रेडिएशन प्रेशर। सो फोर्स का वैल्यू हम लोग निकाल दिए, एनर्जी का वैल्यू निकाल दिए, चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू आल्सो वी नो। ओके, सो नाउ वी कैन इजीली डिस्कस अबाउट द प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर माने जदि गोटे कंटेनर भितरे गोटे रेडिएशन टे पास करूची एवं ए वाल्स रे हिट होउची, तापर हिट हला परे इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड, समथिंग इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, समथिंग इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड, again this is getting something absorbed and again reflected। ये सब जो जिंस चलीची फेनोमेना आ भितरे। ओके, सो से जो प्रेशर टा केते, that we are actually calculating for the time being for the plus 2 level। We will discuss two ideal cases, that is if the radiation is totally absorbed and the radiation is totally reflected back along the path। so pressure ର value कोन, pressure ର value कोन, तार formula कोन, force per unit area। so force per unit फोर्स area पर जदि यूनिट एरिया। तो force per unit area हमें जदि पकेवा, force is equal to IA divided by C divided by area। so I divided by C is the total absorption। similarly for total reflection it is 2IA by C, so it is 2I by C, that is total reflection back along the path। जदि गोटे problem रे हमको intensity of the radiation देछि, okay, and problem करिवा next class आडू problem करिवा। so C is the velocity of the light, we know what is the value, so we can calculate what is the pressure, radiation pressure। बुझियला? यस सर। अच्छा, ये जो YouTube रे आ दौ नांदी कि तम मानकर ये जो हमर क्लास हम सब करूचे पढुचे ताको आ दौ नांदी बोले? सर ना सर दौ नथिले किंतु एबे दौछंती। एबे दौचंदी? यस सर। ଦି ଦିନ ହବ। ठीक करचंदी। से कोन मका मोर तो क्लास उडा को आसुनी, सेडा सब बैकअप क्लास उडा कर लिंक उडा दौचंदी। ना सर क्लास रो लिंक भी आसुचे हम क्लास रो। अच्छा, न्यूक्लियर फिजिक्स रो जो प्रॉब्लम सॉल्व ଏଇ कले sir हे जैछि तो? एबे दीदी ने ଏଇ ଦି ଦିନ ହେଲା सर यूट्यूब रे जस्ट जाके खोजला सर किछि मिलुने ठीक से। हां, खोजियो के पड़ियो। नहीं नहीं, मो कहया कथा तुमको दौचंती कि न दौचंती सेटा अलग कथा, ग्रुप रे लिंक है, बट आई एम आस्किंग वेदर दे आर अपलोडिंग और नॉट। अपलोड तो करना होगा एटलीस्ट। सेउडा तो सर सर यूट्यूब रे सर किछि सर्च पई भी किछि हां, सर्च फैसिलिटी पाई नाही। हां, आ केमे फैसिलिटी जानियो अछि सर यूट्यूब रे, फैसिलिटी नाही बोली कोन सर्च करि परिबो चाहिले, किंतु कथा होछि जे से जो एते गुडे वीडियो हे गेला बेलको तते दी कष्ट होतुबो सर्च करिया सर पे। डेट भी मेंशन नाही सर सेथरे। हां, डेट टा मेंशन करिया कथा एटलीस्ट। तमे माने कहूनो, तमे जने जेतेले कथार्ता करूचो एडमिनिस्ट्रेशन को कुहो ए सब जिंस जे सर मु हम। कहिछि सर। हां, कुहो सब कुहो एडा जहा जहा प्रॉब्लम होची सर डेट मेंशन करंतु, ये करंतु, एडा सब कहिवो ना। आ पिला मने करो ଟୋଟାଲି ଦିଆ ନଥିଲା ସାର୍, ଏଇ ଦି ଦିନ ହେଲା ଦିଆ ହେଲା। हां, someone has a suppose नेट ଟୋଟାଲି ଭିଡିଓ प्रॉब्लम। ଦଉ नथले। किसी का नेट प्रॉब्लम है क्या है, किसी का आज आया नहीं क्या नहीं, तो उसको सब देने से सब देखेंगे ना।
यस सर मागिले दउछन्ते मु एब्सेंट थिली मागिले रो हाँ देइथिली मागिले काहे की दबो एटा तो गोटे नियम जे टोटल तम क्लास हैला दे हैव टू सेंड द लिंक मागिया पई काहे की जीवो लिंक सेंड कर देला परे जे हां पिला जदी पाठ न पढिबो दैट इज ए सेपरेट इशू सो यू ऑल ऑफ यू से दिस थिंग्स जे हमको सर हमें केते केमती क्लास करि पारनु कोन करि पारनु आपण जेमती आगु रेगुलर चलतला सेमती चालू हैला न्यूक्लियर फिजिक्स रा प्रॉब्लम जो माने बहुत से न कम अटेंडेंस थिला 10 12 जन थिलो तो सेउडा सब जाई कि देखो सेउडा केमती कोन सॉल्व करबा प्रॉब्लम उडा न कले केमती हो अच्छा एटा उडे मोर पेन ता कोन हेछि तार इरेजर काम कोनी कि कोनी अच्छा कोन हेछि रे देखिया यहाँ पे अरे साला इरेजर काम नहीं कर रहा है क्या हम बोलेंगे बार बार इतना कौन करेगा राइट क्लिक ये सब ऑप्शन नॉनसेंस नॉनसेंस छोड़ so what is the wavelength of a electromagnetic wave emitted by an oscillator antenna system छोड़ if L is equal to this much microhenry and capacitance is equal to this much picofarad. What is the wavelength of the electromagnetic wave? So what I said, frequency is equal to what? 1 by root over 2 pi root LC. So 1 by 2 into 3.14 pi का value divided by कौन L ता केते लिखिबा 0.253 into 10 to the 10 to power the power minus 6 अच्छा into capacitance 25 into 10 to the power minus 12 picofarad pico माने 10 to the power minus 12 हैला एटा हला frequency yes sir but the question is asking about wavelength so wavelength क्या हो जाएगा lambda into f is equal to c so c by f is equal to lambda so just एटी कौन है जीवो c we know that is 3 into 10 to the power 8 meter per second डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी इतना है तो ये टोटल क्वांटिटी ऊपर चला जाएगा 2 into 3.14 into root over 0.253 into 25 into 10 to the power minus 12 to 10 to the power minus 6 अच्छा इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो 25 into 25 ये 0.3 इसको नेगलेक्ट करो ठीक है 25 into 25 इसको अगर करना होगा so we have to multiply some केते एटा जदी 25.3 करियो पड़िबो हमें केते मल्टीप्लाई करियो पड़िबो 100 100 हेले डिवाइड भी 100 करियो ना yes sir हाँ अच्छा yes sir so 25 into 25 रा स्क्वायर 25 रा स्क्वायर रूट ओवर केते गेला 25 25 25 into 3 यहाँ पे 3 है into 2 into 3.14 एटा को आगो कर दबो जति की वेरिएबल वैल्यू तम तापरे ए जो मल्टीप्लाई डिवाइड कलो जोटा कोन
100 by 100 सेटा जो मल्टीप्लाई कलो डिवाइड कलो सेटा कटि गला से तार आपे आपे कटि काटि जीवो बाकी जेति की क्वांटिटी रोइला 10 to the power minus 12 10 to the power minus 6 ये टोटल कितना है 10 to the power minus 18 और रूट ओवर 10 to the power minus 9 yes sir 10 to the power minus 9 एठी रोइला 10 to the power 8 माने कोन 10 to the power minus 1 yes sir आउ से जो 25.3 करथिले सेटा हां तो 25.3 जोटा करथिली हां से जो 100 टा ये करो किंतु कोन करियो सर सेटर आ गोटे 1 आसीबो 10 to the power minus 2 हबो ना हां तो 25.3 0.2 एटा से लिखुनी कोन करिवो हला এটা কোন है जो 10 to the power minus 3 सिंपली बुझिएला कौन हला ना नहीं -2 हबो ना सर काहे कि -2 हो सर तार रूट अछि अच्छा रूट अछि हां माइनस 10 to the power -2 रो रूट हे गेले हां 1 हे माने एटा टोटल -1 2 हे गेले हां 2 है तो सेही अनुसार तमे ताकू भांगी के बुझी पालानी को कम मृत्युंजय वंचिच स्वाई मृत्युंजय स्वाई देखा नहीं पिला राजदीप दास हेलो राजदीप सरदेसाई हेलो कौन ये सर किछि के कोना दे हां सर बंचिच हां सर कोची से नेट प्रोब्लेम थला तो सर ये केमते होतला बाकी सब देखुछ ना हां सर देखुछ तुम घर कोठी बाबा मालकानगिरी सर मालकानगिरी अच्छा हां ठीक ठीक मालकानगिरी को एमवी बे तो मालकानगिरी रोची बाकी गांव होची 92 एमवी 92 यस सर 3259 हां मृत्युंजय कौन खबर सर बोलो कुआडे हजी जाइतिल तो दिन माने मासकु केटा क्लास करछु कहली प्राय सर करछि सब करछु काई मु तो केबे देखुन तते सर चुप रहउछि सोनाली स्वर्णमयी प्रधान चुप रहउछु माने पाठ बुझुनु अब सर बुझु सर सब नोट लिखुछि सर बुझु सोनाली स्वर्णमयी प्रधान यस सर बंचिच यस सर आ कोन बुझी होछि ना नहीं हां सर बुझियो श्रीमन विश्वजीत जानी सस्मिता साहू कुआडे लुचि जाउछो पिला माने जानी होनी गोटे गोटे पिला ये 3-4 जन पिला दे आर इंटरैक्टिंग अदरवाइज none is actually interested or whatever I can't understand सस्मिता यस सर कोन बुझी होछि ना नहीं पाठशाठ आज्ञा सर का केबे किछि पचारन सब बुझी जाउछो 100% efficient engine that is not possible
चौधरी, हेलो। सर क्या समझ में आ रहा है कि नहीं सब? आ रहा है सर। ठीक है, कोई कंप्लेन नहीं है ना? नो सर। अच्छा, नहीं कंप्लेन किया कीजिए, ऐसा कोई नहीं है, मतलब कंप्लेन जितना करेंगे उतना अच्छा होगा, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए। यस सर। ठीक है, टेस्ट वगैरह दे रहे हैं कि नहीं? यस सर। अच्छा, କିଏ ଗୋଟେ କହିବ କହୁଥିଲା। Okay, so thank you for today class. नेक्स्ट क्लास रे प्रॉब्लम करिवा एई चैप्टर ऊपर हला। हां आ की कोन कहबो? से जो इंटेंसिटी ऑफ मु पचार छ राजेश। हां को जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फार्मूलाटा कोन कहली? तापर एटा होची इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एटा एटा परा एटा जोडी ये करछि एटा और देखिए प्रॉब्लम दीजिए फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हां in a parallel beam of light of intensity 2 over m square over per हां meter square. एम्पलीट्यूड टा कोठी? Oh, दिस इज द yes एम्पलीट्यूड। sir. ओके, तो कहीं बाहरी होने कहीं फाइंड Find the amplitude of the electric field in a parallel beam of light of intensity 2 Weber per meter square. find the amplitude of a electric field, electric EM wave. को Only को electric field this sir in a parallel beam. Find the amplitude of the electric field. Electric field in a parallel beam of light intensity 2 W by m square watt by meter square. 2 Weber per meter square. Watt per meter square. W by m square. Yes sir. समझते देखो जो ये क्वेश्चन टा? यस सर। हां एटा तुम मनकर टास्क आ कोन नेक्स्ट क्लास रे कहबो ब्रजेश्वर प्रॉब्लम की सॉल्व करछि देखिबा। All of you write this question. Find the amplitude of an electric field in a parallel beam of light intensity 2 watt per meter square. Okay. Yes sir.